Good morning, students. In this video, today we are going to revise fourth lesson of EVS book. The name of lesson is Plants Our Green Friends and the number of lesson is 4. In this lesson, we are going to learn about the function of each part of plant and plants need air, water and light to grow. Now, types of plant. We see different types of plant all around us. They are also called the lungs of a planet. They are of different shape and sizes. Plants can be divided into various categories according to their size, stem and root. प्लांट्स को उनके साइज स्टेम और रूट के आधार पर हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं. These categories are, firstly, we read about trees. What is trees? Plants that grow tall and thick stem are called trees. Example, mango and banana. Next, second is shrub plant. Plant that lower than trees with woody stem. Example, rose. Next is herbs. Plant with weak and soft green stem are called herbs. Example, coriander. Next, climber. Plant with weak stem that need support to grow are called climbers. And the last one is creeper. Some plant with weak stem spread or creep on the ground. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम कमज़ोर होते हैं और वो ज़मीन पर फैल जाते हैं. These are called a creeper plant. Example, pumpkin. Now, parts of plants. A plant can be divided into main two parts, the roots and the shoot. The plant can be divided into main two parts. How many parts? Two parts. The root system and shoot system. The part of the plant that grow below the ground is called root. जो ज़मीन के नीचे बढ़ते हैं उन्हें root कहते हैं. And the part of the plant that grows above the ground is called shoot system. The shoot has stem, fruit, seed, leaves, flowers, and now the root. How many types of root? There are mainly two types of root, the tap root and the fibrous root. It is example of tap root. I will show you with some live example. This is example of tap root. It is main root which grow from the end of the stem. जहाँ से स्टेम इंड होती है वहाँ से एक मेन रूट आती है, फिर उसके साइड साइड से जो रूट निकलते हैं इसे हम टैप रूट कहते हैं. एंड इन फाइब्रस रूट द रूट कम्स विद द एंड ऑफ स्टेम. जहाँ से स्टेम इंड करता है वहाँ से बहुत सारे छोटे 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 लैटरल रूट्स निकलते हैं. इन्हें हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं. सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट एंड इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट. नाउ फंक्शंस ऑफ रूट. The main function of roots are, it fixes the plant on the soil, it takes in water and minerals from the soil. ये मिट्टी में से जो पानी और खनिज लवण होते हैं उन्हें अवशोषित करता है. Some roots are swollen and thick. These store food. कुछ रूट ऐसे होते हैं पौधे के जो अपने आप में भोजन संग्रह करके फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और जिन्हें हम फूड के रूप में खाते हैं. जैसे एग्जाम्पल रेडिश, बीटरूट, turnip. Now, a stem. The stem is the main part of a shoot that grows above the ground. Functions of a stem: it keeps plant upright and straight. ये पौधे को खड़ा और सीधा रखता है. It carries water to the leaves. ये पत्तियों तक पानी पहुंचाता है. It also carries the food made by the leaves to the different parts. पत्तियाँ जो अलग अलग तरह के खाना बनाती हैं उन सबको ये क्या करता है, अलग अलग भागों में पहुंचाता है. पौधे के लिए खाना कौन बनाता है? लीव्स बनाते हैं.
स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर थिक, कुछ पौधे के स्टेम जो होते हैं वो थोड़े मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, बिकॉज दे स्टोर फूड, वो अपने अंदर फूड जमा कर लेते हैं और जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं. एग्जाम्पल शुगर केन एंड पोटैटो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीव्स. Leaves is the most beautiful part of the shoot. The flat part of leaf is called leaf blade or lamina. These are different types of leaves. The flat and broad part of leaf is called leaf blade or lamina, and the main middle line is called vein. Functions of a leaf. What is the main function of leaf? The leaf make food for the plant with the help of air, water and sunlight. This process is called photosynthesis. पौधे के लिए पानी, हवा और धूप में इन सब की मदद से पत्तियां जो खाना बनाती हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. लीव्स गिव्स आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. और पत्तियां कुछ गैस निकालती है, गैस छोड़ती हैं जिन्हें हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या? ऑक्सीजन. लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड. एग्जाम्पल स्पिनच एंड कैबेज. नाउ फ्लावर्स. Flowers are the most beautiful part of the plant that are brightly colored and have sweet smell. Flowers change into fruit. The most beautiful part of a plant is flower. I will show you a China rose flower, a hibiscus flower. This is the hibiscus flower. This is the China rose flower. And the green part of flower is called sepal, and the most beautiful, attractive, colorful part of a flower is called petal. Okay. Now fruits and seeds. Fruits have seed inside them. Some fruits have one seed and some have a few, while others have many seeds. Now, did you know? क्या तुम जानते हो? The process by which a seed grow into a new plant is called germination. एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा बीज से जो पौधे बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. This lesson is in now. Now keywords. Function. Role or task. Edible, which can be eaten by us. ऐसी चीज़ जिसे हम लोग खा सकते हैं. And at last, I will show you a live example of a flowering plant. Parts of plant. What is this? This is roots of plant. And this is main stem. These are leaves. This is flower of plant. This is the flower of plant. This is fruit. This is fruit. So roots, stem, leaves, flower, fruits. Children, look at the picture. This is your project. Make parts of plant in your project work. Okay. Root, stem, fruit, seed, leaves, flower. Types of root: taproot, fibrous root. Plants need air, water, soil and sunlight to grow. I think you all understand well. Okay, bye children.